Assalamu alaikum students. Students, today we will discuss the coordination in case of plants. We have discussed coordination in case of animals. Coordination in case of animals में वहाँ पर मैंने आपको बताया what coordination is. इस वक्त भी मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ कि coordination किसको कहते हैं. Now coordination is the working together of various organs. बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स होती है, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं, वो वेरियस पार्ट्स दे वर्क टुगेदर, दे वर्क फॉर ईच अदर, और वर्क एक साथ करने से दे प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स, दे प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. स्टिमुलस हमारे पास बहुत तरह के होते हैं. लाइट की स्टिमुलस हो सकती है, ग्रेविटी की स्टिमुलस हो सकती है, इसी तरह से किसी केमिकल की स्टिमुलस होती है, हीट की का स्टिमुलस हो सकता है. और उन सारी स्टिमुलस को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमारी बॉडी रिएक्शन दिखाती है, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स दिखाता है. और उस रेस्पॉन्स दिखाने के लिए देयर इज अ यूज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, देयर इज अ यूज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, एंड दीज वेरियस बॉडी पार्ट्स दे वर्क टुगेदर for producing a stimulus, for producing a reaction, for producing a response to any external stimulus. This working together of various body parts to produce a proper reaction, to produce a proper response to an external stimulus is called as coordination. Now, in case of animals, I have told you that animals के पास there are two systems for the purpose of coordination in case of animals. One is called as the nervous system and another is the hormonal system, जिसको हम endocrine system भी बोलते हैं. चूंकि animals के पास nervous system होता है, animals के पास sense organs होते हैं, इस उनकी वजह से, सेंस ऑर्गन्स की वजह से और नर्वस सिस्टम की वजह से the animals have quick response to stimulus. They show quick response to stimulus. Now what about the in plants? Now in case of plants में आप देख रहे हैं, plants do not have the sense organs. They do not have eyes, they do not have ears, nose, they don't have these sense organs. Also, they don't have the nervous system. There is absence of brain, there is absence of spinal cord, there is absence of nervous these neurons. All these things are absent in case of plants. But the plants do show the response to stimulus. Although this response to stimulus in case of plants is very slow, but they do show the response to any external stimulus. The stimulus may be the light, the stimulus may be the gravity, the stimulus may be the water, the stimulus may be the touch, the stimulus may be the chemicals. These plants, they show the response, they show the reactions to these stimulus. Although this response to stimulus in case of plants, it is very slow. Why it is very slow? Because plants के अंदर nervous system नहीं होता है, plants के अंदर sense organs नहीं होते हैं. That is why plants have slow response to stimulus. But there is response to stimulus. But plants show the reaction, plants show the response to the external stimulus. But this response to stimulus is very slow. Now, कौन सी चीज, कौन सा this thing is involved in the coordination in case of plants. प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है. हमने देख लिया कि एनिमल्स के अंदर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. चूंकि सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम बोथ दीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट, देन किस तरह से प्लांट के अंदर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है. तो प्लांट्स के अंदर होते हैं हार्मोन्स. दोज हार्मोन्स दे आर कॉल्ड एज फाइटोहार्मोन्स. प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं फाइटोहार्मोन्स. और फाइटोहार्मोन्स क्या होते हैं? फाइटो जो होता है, फाइटो मीन्स प्लांट्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड हार्मोन मीन्स हार्मोन्स. सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स. They are also called as plant hormones. Phytohormones, they are also called plant hormones. Now, what are these hormones? These plant hormones, या phytohormones, they are organic chemical substances. They are organic
chemical substances. These plant hormones, phytohormones, they are organic chemical substances which are synthesized in one part of the body, plant body, and then they are utilized in the another part of the body. The part of the body where they are synthesized, we can call it the site of synthesis, site of manufacturing, site of production of plant hormones. Then the plant hormones are utilized, उनका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर होता है, किसी दूसरे पार्ट में हो जाता है, और जिस पार्ट में, जिस जगह पर प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट हार्मोन्स यूटिलाइज किए जाते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन. तो वहाँ पर वो एक्शन करते हैं, वहाँ पर अपना काम करते हैं. सो दीज प्लांट हार्मोन्स, दे हैव टू थिंग्स. दे हैव साइट ऑफ प्रोडक्शन या साइट ऑफ सिंथेसिस, and there is also the site of action, site of synthesis or site of production, site of manufacturing, where these plant hormones, phytohormones are manufactured, where they are synthesized, where they are produced. Then they enter into the phloem. फ्लोएम के अंदर से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जिस पार्ट में ये इस्तेमाल हो जाते हैं उसको हम वहाँ पर ये दिखाते हैं एक्शन, वहाँ पर ये यूटिलाइज करते हैं. तो दैट विल बी कॉल्ड एज द साइट ऑफ एक्शन. सो साइट ऑफ एक्शन तक ये फ्लोएम के जरिए, आपको याद रखना है कि प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट ऑकर्स थ्रू द फ्लोएम. आपको पता है कि फ्लोएम के जरिए फूड मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स. तो फ्लोएम के जरिए प्लांट हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस टू द साइट ऑफ देयर एक्शन. अब चूंकि सिंथेसाइज किया जाता है इनको एट द साइट ऑफ सिंथेसिस, द साइट ऑफ सिंथेसिस इज मोस्टली द शूट टिप. It is mostly the shoot tip where these hormones are synthesized. Then इनका एक्शन कहीं भी हो सकता है, कोई भी सेल हो सकती है, कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट हो सकता है. तो जहाँ पर ये इनका एक्शन करते हैं, जहाँ पर ये अपना फंक्शन कराते हैं, जहाँ पर ये अपना रेस्पॉन्स दिस फंक्शन करते हैं. तो दिस साइट ऑफ एक्शन, वहाँ पर ये क्या करते हैं एट द साइट ऑफ एक्शन. साइट ऑफ एक्शन में these hormones, plant hormones, they are involved in the growth. They are involved in the growth. They regulate the growth. यहाँ पर site of action में they can either enhance the growth. They can either enhance the growth, or they can suppress the growth. They can, or you can say, promote the growth, or they can inhibit the growth. Okay, so at the site of their action, at the site of their utilization, these plant hormones, they regulate the growth by either enhancing the growth, by either promoting the growth, by either increasing the growth, or at the site of their action, they can decrease the growth, they can suppress the growth, or they can inhibit the growth. That is why, चूंकि ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, हार्मोन्स के जरिए ग्रोथ रेगुलेट कराई जाती है. द ग्रोथ कैन बी इंक्रीज्ड, ग्रोथ कैन बी प्रमोटेड, और इट कैन बी this inhibited. This promotion or inhibition we together call the regulation. That is, they regulate the growth. That is why these plant hormones, phytohormones, they are also called as plant growth regulators. They are called as plant growth regulators. They are called as plant growth regulators. That means they can regulate the growth. They can either inhibit the growth or they can promote the growth. So that is why they are called as plant growth regulators. Now plant growth regulators हमारे पास 5 है. We have 5 types of plant growth regulators. We have growth regulators, जिनके जरिए ग्रोथ रेगुलेट की जाती है या इंक्रीज कराई जाती है ग्रोथ को या डिक्रीज. वी हैव
Number 1, auxin. We have gibberellin. Cytokinin, abscisic acid, ethylene. We have 5, 2, 3, 4, and 5. These growth regulators. Out of the 5, first 3, that is auxin, cytokinin, and gibberellin, they are called as plant growth regulators. They are called as plant growth promoters. All these are plant growth regulators, but these three are called as plant growth promoters. They are called as plant growth promoters, while as these two are called as growth inhibitors. Growth inhibitors. Okay, although the ethylene is considered both as well growth promoter as well as the growth inhibitor, while as abscisic acid is a growth inhibitor. Some authors, some scientists have put it in the growth promoter. It has both the action, that is growth promoting action as well as the growth inhibiting action. So these are the growth promoters. We'll take them one by one in the separate video.